Hello friends, welcome to the channel of SwiftUI series. Welcome to the SwiftUI series. Let's learn how to add a navigation bar using a SwiftUI. This is all basic concept we are covering. So please watch video so that you can learn basic from start. And please subscribe to channel, share video and like video. Thank you so much friends for watching. Let's come to the point and how to add a navigation view. First of all, this is our text. Let's create a form which we have already learned in previous one. This is how we can create a form. Sectional form also we have learned. This is how it works. Multiple time you can add same element. प्रीव्यू यहाँ पर क्लियर प्रीव्यू दिखाई देगा, हमें फॉर्म बन गया हमारा। अब ये जो सारा का शेक्स है इसको हम एक नेविगेशन व्यू में ऐड करेंगे। नेविगेशन व्यू, ठीक है। उसके अंदर ये पूरा फॉर्म बन गया। दिस इज हाउ द इट ना हम इसको एक टाइटल डिफाइन करेंगे नेविगेशन को। तो नेविगेशन टाइटल यहाँ पर माय world. This is how it looks like a setting screen. This is the best thing that we can apply and see our changes directly as compared to Swift. अगर हम लाइन मोड में डिफाइन करना चाहते हैं, डिस्प्ले मोड सेट कर सकते हैं, डॉट इन लाइन. This is how title looks, but I think that's not looking best as this one, so this is the right way to this that it's work like jam. Cool. This is how you can see the navigation bar works here. There is a one case. Let's without navigation bar it's like देखिए हम सिर्फ फॉर्म को रन करते हैं तो ये जो कंटेंट है हमारे जो ये सिस्टम कंट्रोल्स के उसके ओवरलैप्स होता है। अगर ऐसा हम नहीं चाहते तो हम ये नेविगेशन व्यू का यूज़ करते हैं तो हमारा ये इशू इजीली होता है। सो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट जब क्रिएट होती है तो हम नेविगेशन व्यू यूज़ करते हैं, नेविगेशन बार का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कंटेंट जो यूआई के डिफ़ॉल्ट सिस्टम कंट्रोल से उसको ओवरलैप नहीं करेगा इवन इफ वी आर स्क्रॉलिंग ऑल कंटेंट। So this is a good looks UI practice. So navigation bar is the best option to handle the good designing. So this is how you can learn Swift basics. Thank you for watching the video. Thank you so much, friend.